तो हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी चैनल में मैंने कोई भी लीक या इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली नहीं थी, लेकिन फाइनली मैंने आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक ऐसी वीडियो ढूंढी है जो पबजी मोबाइल के सैनहोक मैप से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जो भी सैनहोक मैप खेलते हैं तो उसके लिए तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और आप अगर सैनहोक मैप नहीं खेलते हो तो कोई नहीं है, आप जो आपका दोस्त सैनहोक मैप खेलता है ये वीडियो उसको शेयर कर देना, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो चलो भाई लोग वीडियो को लेते शुरू, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बाजू वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैंने मेरी चैनल पे एक गिव अवे स्टार्ट किया है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने जो उसकी वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से जाके वो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। तो चलो भाई लोग वीडियो को ले शुरू। Rolling down the lonely roads of Sanhok is PUBG's latest feature, a heavily armored loot truck carrying a treasure trove of gear for those persistent enough to take it down. But where can you find these trucks? What loot do they offer? And how do you stop them? Loot trucks spawn exclusively on Sanhok and originate from one of several garages located around the island. When the match starts, up to 4 of these garages will release a truck, which travels roads around the island until taken down by players. Up to 4 trucks will roam the island at a time, and another will be spawned each time one is destroyed, up to a maximum of 8 total trucks per match. These heavily armored behemoths require a large assault to take down, and will push anything in their path out of the way. They can even resist the force of other vehicles running into them. In fact, the only way to stop a loot truck's movement is by deploying spike strips, though even then the pause is only temporary. Still, a stationary target is easier to hit than a moving one. Loot trucks take decreased damage due to their heavy armor, but they do have some vulnerabilities. Attacking the trucks from the sides will deal increased damage, and explosive weapons such as the Panzerfaust, which now spawns in Sanhok, pack a heavy punch against these trucks as well. As the trucks take damage, they'll drop containers of loot, and give even more once destroyed completely. This loot can contain level 3 gear, and weapons already kitted out with attachments. There are even 4 specially skinned weapons from a historic moment in Sanhok's past. One quick note, loot truck explosions are no minor thing, so make sure you give them some room when they finally go boom. Every shot fired is a signal to enemy teams, so you'll need tactics, persistence, and speed to take them down and safely loot their treasures. These trucks often travel through the reworked towns of the island, so start here if you want a little more cover while you take them down. Loot trucks are spawning now on Sanhok, so grab your team, some explosives, and a lot of ammo, and drop in today. तो ओके गाइस, तो होप सो आपको यार ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई लोग के साथ, फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना ये वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ आप सबको एक और नई वीडियो में। तो चलो भाई लोग, बाय। नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ अपनी तपीश मिटाओ या ऊर्जा पैदा करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। झूठ पीछे सच्चाई की बानी है, मुंह पे है सफेदी और चाल इनकी काली है, किया जो जुर्म उसकी सजा काला बानी है। शब्दों से खेलूं मैं वो गुलूंगा ज्वाला, टिकटॉकर्स के मुंह से छीनने वाला है निवाला, पीठ पीछे वार नहीं सीधा हाथ डाला, इज्जत तेरी लूटू कर सवाला लाला, बातें तेरी बिकी उनमें आता कोई स्वाद नहीं, देंगे सब दांत मेरे वार देते फाड़े, शब्दों का श्राप कर दे तेरे खट्टे दांते, सीधा बात करूं